Good morning, everyone. I hope you all are safe at your places. Today, we are going to start with our new chapter of your social science book, that is Movements of the Earth. Okay, in our last chapter, we have talked about latitudes and longitudes. Now, in this chapter, we will learn about movements of the Earth. कि अर्थ कैसे मूव करता है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है सो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन कि अर्थ कैसे मूव करता है रोटेट भी करता है एंड रिवॉल्व भी करता है ठीक है हम इनके बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं डे एंड नाइट व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट हम ये पढ़ने वाले हैं कि डे और नाइट कैसे होती है ठीक है आफ्टर दैट सीजन्स आप डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स देखते हो स्प्रिंग समर ऑटम विंटर ये डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स कैसे होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे फिर एंड solstice and equinox now solstice and equinox both these terms are new and we are going to study about them also okay so let's get started now here this is the sun and he's saying hi I am the sun with me here are the four inner planets Mercury Venus Earth and Mars. They, along with the other outer planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, go around me. This movement is called revolution. Now, Sun, देखिए, Sun बोल रहा है मेरा नाम सन है मेरे साथ यहाँ पे 4 इनर प्लैनेट्स हैं इनर मतलब क्या होता है समथिंग जो अंदर के साइड हो ठीक है कौन कौन सी है मरकरी वीनस अर्थ एंड मार्स एंड दे अलोंग विद द अदर आउटर प्लैनेट्स आउटर मतलब क्या होता है बाहर तो आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून total how many planets are there are 8 planets okay 4 planets are inner and 4 planets are outer planets now he is saying they all the planets go around me सब मेरे मेरा चक्कर लगाते हैं गो अराउंड एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन और हम ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं हम रेवोल्यूशन बोलते हैं ठीक है I am circling around the sun. But do you know that I am going around and round on my own too? So I am both revolving and rotating. Now, Earth is saying to the sun, I am circling around the sun. मतलब मैं तुम्हारा चक्कर लगाता हूँ सन का चक्कर लगाता हूँ बट डू यू नो कि मैं अपने खुद के पाथ में भी गोल गोल घूमता रहता हूँ ओके सो आई एम बोथ रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग तो मैं रिवॉल्व भी कर रहा हूँ और रोटेट भी कर रहा हूँ ओके सो sun is look there goes the earth on its look there goes the earth on its path around me after that earth was saying okay I am circling around the sun, but I'm also revolving around the sun. I'm going round and round on my own path. Okay, so these are inner planets. I am Mercury, I am Venus, I am Earth, I am Mars. We all are also called the terrestrial planets. Now we have learned about the Mercury, Venus, Earth, and Mars are called inner planets as well as terrestrial planets. What are the two names for the what are the other name of inner planets terrestrial planets ठीक है Mercury Venus Earth and Mars are called inner planets as well as terrestrial planets okay now name the two movements of the earth now write down the two movements of the earth in your book yes Now, what we are going to study in this chapter, we already take the big idea about this chapter, what we are going to study in this chapter. Now,
we shall learn about movements of the earth. There are two movements of the earth, that is rotation and revolution. In rotation, we will talk about day and night. What causes day and night? Due to the rotation of the earth, day and night causes, and due to revolution, seasons happen. Okay, like spring, summer, autumn, and winter. There are four main seasons. These seasons occur due to the revolution of the earth. Day and night causes due to rotation. Seasons occurs due to revolution. Okay, now we will talk about the movements of the earth. We see varying positions of the sun at different times of the day. For example, at noon, the sun is right over your head and you feel its heat and brightness. In the evening, the sun sets in the west. These positions of the sun give us the impression that the sun keeps moving from one corner of the sky to the other. Now, हम we see wearing. First of all, what is the meaning of wearing? Wearing का meaning क्या होता है? Just look at the, first of all, we will listen to the pronunciation of wearing. Wearing, okay? Now, something which is not all the same and is different is called wearing. ऐसी चीज जो सेम नहीं होती, ठीक है, डिफरेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेयरिंग बोलते हैं. उसका मीनिंग क्या होता है? वेयरिंग, समथिंग विच इज नॉट सेम एट ऑल. सो आप सब देखते हो सन को, ठीक है, सुबह उठते हो सन को देखते हो, सन ईस्ट में होता है. फिर नून में देखते हो कि सन आपके ओवरहेड पे होता है, ठीक है, ओवर योर हेड. और बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है नून में, ठीक है. और इवनिंग में देखते हो सन जो होता है वेस्ट डायरेक्शन होता है, सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन. नाउ ये जो पोजीशंस है, दीज पोजीशंस ऑफ द सन गिव अस द इम्प्रेशन मतलब वी इन्फ्लुएंस्ड कि सन जो है वो मूव कर रहा है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में. आप सबको लगता होगा कि जो सन है वो मूव कर रहा है, कि मॉर्निंग में कहाँ पे था? मॉर्निंग में ईस्ट में था, नून में ओवर योर हेड, नून में ओवर हेड था, एंड इवनिंग में कहाँ पे था? इवनिंग में वो था वेस्ट में, ठीक है. सेट्स का वो सेट कौन सी डायरेक्शन में हुआ? वेस्ट डायरेक्शन में हुआ. तो आप सबको लगता है, मैं भी जब छोटी थी तो मुझे लगता था कि जो सन है वो क्या है, वो मूव कर रहा है. बट however the fact is that the sun never moves. आप सबको पता है सन कभी भी मूव नहीं करता, सन अपनी ही डायरेक्शन में, सॉरी अपनी ही प्लेस में होता है. ओके. The planets in the solar system, including the Earth, are the ones that are always in motion. सोलर सिस्टम में हमने सोलर सिस्टम चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में. सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, जो भी हमने बात की थी, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. ये जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो क्या करते हैं? वो हमेशा मोशन में होते हैं. नाउ व्हाट इज मोशन? मोशन इज समथिंग व्हिच ऑलवेज मूव्स, ठीक है, मूव्स. मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन. The process or action of moving is called motion. एक ऐसा process और action move करने का, उसे हम जो move करता रहता है, ठीक है, चलता रहता है, घूमता रहता है, उसको हम motion बोलते हैं. जो planets हैं हमारे solar system में, वो हमेशा motion में रहते हैं, ठीक है. So that's why जो sun है, हमें लगता है कि सन क्या है, सन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बट नहीं, हम अर्थ में रह रहे हैं. अर्थ अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. The earth has two basic movements. These movements are rotation and revolution. अर्थ की दो बेसिक मूवमेंट्स हैं. कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं? रोटेशन एंड revolution. What are the two basic movements of the earth? Rotation and revolution. Now what is rotation? First of all, we will listen to the pronunciation. Okay, rotation. जब भी मैं आपको pronunciation सुनाती हूँ, please उसके साथ आप repeat किया करो. What once again, I am now speak it up.
rotation. Okay, now what is rotation? The movement of the earth on its axis is known as rotation. In our last chapter we have learned about axis. What is axis? हमने एक्सल पढ़ा था, ठीक है। दो व्हील्स होते हैं, उसके बीच में अगर हम एक स्टिक को लगा देते हैं, ठीक है, और स्टिक के थ्रू वो क्या चलता है, वो व्हील्स चलते हैं। तो वो व्हील्स क्या है, उस स्टिक में उस स्टिक में ही घूम रहे हैं ना, स्टिक के आजू बाजू ही घूम रहे हैं ना, तो दैट इज नोन एज एक्सिस, ठीक है। इट रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है अपने ही डायरेक्ट, ठीक है। वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस टेक्स 24 आवर्स। कितने आवर्स लगते हैं उसको अपने एक्सिस पे रोटेट करने में? 24 आवर्स। ड्यूरिंग दिस टाइम द अर्थ एक्सपीरियंसेस डे एंड नाइट, और इस वजह से अर्थ क्या एक्सपीरियंस करता है? डे और नाइट एक्सपीरियंस करता है। ऑन इट्स एक्सिस मतलब अपने ही पाथ पे, अर्थ क्या है, अपने ही पाथ पे ऐसे गोल 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 घूमता रहता है, ठीक है। The part of the earth that faces the sun experiences day and the part away from the sun experiences night. अर्थ के जिस पार्ट पे सन, देखो, नाउ यू आर लुकिंग एट द ग्लोब, ठीक है, दिस इज द ग्लोब, दिस इज द अर्थ, ठीक है। अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना। आप ये वाला जो आप साइड देख रहे हो ये थोड़ा ब्राइट है, और ये वाला साइड आप क्या कर रहे हो, डार्क साइड दिख रहा है आपको, शेडो दिख रही है, डार्क साइड दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ब्राइट साइड है मतलब इसके सामने यहाँ पे क्या है, अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे अर्थ, सॉरी सॉरी, ये जो आप ब्राइटनेस देख रहे हो इसके सामने क्या है, सन है, ठीक है। और इसके बैक साइड में सन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, डार्कनेस है। सो अर्थ के जिस साइड में, अर्थ के फेस पे जहाँ पे सन की रेज पड़ेगी वहां पे हमें डे दिखता है, और उसके बैक साइड में हमें क्या दिखेगा, उसके बैक साइड में कौन सा क्या होगा, नाइट होगा, ओके। The earth rotates on its axis, अपने ही एक्सिस पे, ये देखो साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और अपने ही एक्सिस पे ऐसे 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 गोल 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 घूम रहा है, दैट इज रोटेशन, ओके। Now what is revolution? First of all, listen to the pronunciation. Now speak it up. Revolution. The movement of the earth around the sun along its orbit is called revolution. In our last chapter also we have talked about the orbits and orbit के बारे में पढ़ा था। जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, एक ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, अपना ही ओन पाथ, पाथ होता है, ठीक है। एक पाथ जो हम बोलते हैं, एक पाथ होता है, और जब अर्थ अपने ही एक पाथ पे सन के चक्कर लगाता है, ये जो आप सर्कल देख रहे हो ये क्या है, ऑर्बिट है। सन इसी डायरेक्शन में क्या करता है, इसी पाथ पे गोल 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 घूमता रहता है। It takes the Earth 365 days to complete one round along its orbit around the sun. अर्थ को कितना टाइम लगता है एक सन का पूरा चक्कर लगाने में? 365 डेज, तभी 1 ईयर होता है ना। हम 365 डेज के बाद 1 ईयर मानते हैं कि 365 डेज मतलब 1 ईयर कंप्लीट, मतलब अर्थ ने सन का एक चक्कर क्या है, कंप्लीट कर लिया है। The speed of the Earth's revolution is 30 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ, अब सोचो स्पीड क्या है अर्थ की, अर्थ एक सेकेंड में कितना किलोमीटर जाता है, एक सेकेंड में और 30 किलोमीटर, ठीक है। एक सेकेंड में अर्थ कितना किलोमीटर जा रहा है, 30 सेकेंड्स, एक सेकेंड में 30 किलोमीटर जा रहा है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन, जो ये रिवॉल्यूशन है अर्थ का, ठीक है, अर्थ का ये जो चक्कर लगा, ये अर्थ जब चक्कर लगाता है सन के, इसकी वजह से सीजन्स होते हैं। During its revolution, which part of the earth is tilted towards the sun experiences the summer season. Now we will talk more about revolution in the revolution part. Okay, first of all we will complete with we will read about rotation. Okay, now rotation. When you spin on a top, spin a top. आप सबने टॉप चलाया है, ठीक है। एक टॉप जो अपने ही एक खिलौना होता है, ठीक है।
क्या बोलते हैं हिंदी में टॉप को? I just forgot the name of a top, what we call top in Hindi, but spin जिसमें एक गोल गोल होता है, इसमें एक चक्री होती है और आप चलाते हो तो वो गोल 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 घूमता रहता है। तो when you spin a top, it rotates on its axis। वो क्या है, अपने ही एक्सेस पे घूमता है ना। आप एक एग्जांपल ले लो, एक व्हील का एग्जांपल ले लो, एक व्हील का एग्जांपल ले लो। व्हील टू व्हील्स को हमने कनेक्ट किया है एक स्टिक से, और वो जो व्हील है दोनों साथ में कैसे घूम रहा है, वो इस स्टिक, मतलब उस स्टिक के जरिए ही घूम रहा है, मतलब वो उस एक्सिस पे ही घूम रहा है, उस एक्सिस की हेल्प से ही वो घूम रहा है ना। सिमिलरली द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ भी क्या करता है, अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमता रहता है। नाउ देखो दिस, नाउ दिस इज द एक्सिस, और अर्थ क्या कर रहा है, इसी एक्सिस पे देखो, ये आपका मूवमेंट दिया हुआ है, इसी एक्सिस पे बार 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 घूमता रहता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। Now the earth takes 24 hours to complete one rotation। अर्थ को पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, अर्थ को ये अपने ही एक्सिस पे पूरा चक्कर लगाने में, मतलब उसने यहाँ से स्टार्ट किया, वेट, उसने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस से पूरा इसी को अपने ही अराउंड चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, उसको लगता है टाइम 24 hours। ओके, now there is some interesting fact about it। Just look at this rotation। The speed of rotation of the earth is slowing down। आप सबको पता है जो रोटेशन है उसकी जो स्पीड है स्लो होती जा रही है। One rotation of the earth on its axis takes 23 hours 56 minutes and 4 seconds। हम बोलते हैं वन डे में कितने आवर्स होते हैं, देयर आर 24 hours in a day। ओके, बट एक्चुअली में जो अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे उसे कितना टाइम लगता है, उसको 23 hours 56 minutes and 4 seconds लगता है। बट साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि अप्रोक्सीमेटली 140 मिलियन ईयर्स के बाद में, ठीक है, 100 लाइक अराउंड 140 करोड़ साल पहले, ठीक है, 140 करोड़ साल पहले जो के बाद जो है अर्थ को कितना टाइम लगेगा रोटेट करने में, 24 आवर्स लगेगा। बट इंस्टेड अभी कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है, एक्चुअली में 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स लगते हैं। बट हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको 24 आवर्स कर दिया, हमने 4 मिनट्स को काउंट नहीं किया, 3 मिनट्स 56 सेकेंड्स को हमने अभी काउंट नहीं किया, हमने इसको 24 आवर्स काउंट किए। सो जो अर्थ है, ठीक है, उसको ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि 140 मिलियन ईयर्स के बाद में अर्थ को 24 आवर्स लगेंगे रोटेट करने में अपने ही एक्सिस में, ठीक है। So this is the interesting fact about it। Now how many hours Earth takes to complete one rotation? It takes 24 hours to complete one rotation। The only difference is that the axis of the earth is invisible because it is an imaginary line। Now हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में भी कि वो जितने भी लैटिट्यूड्स है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, दे ऑल आर इमेजिनरी लाइंस, हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो जस्ट लाइक दैट जो एक्सिस है, जो हमने ये स्पिनर बनाया है, ये टॉप, जैसे टॉप पे एक स्टिक होती है, वैसे ही ये जो एक्सेस है, ये जो आप डंडा स्टिक देख रहे हो और ये भी क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ये इनविजिबल है, रियल में एक्चुअली में ये दिखती नहीं है। The earth rotates in a slightly slanted position as its axis is tilted। Now what is the meaning of slanted? First of all, listen to the pronunciation, slanted। Okay, anything which is slanted is at an angle that is not 90 degree। now बताती हूँ मैं क्या है ये slanted का मीनिंग। सपोज ये this is straight line and this is 90 degree, ठीक है, this is not slant, this is 90 degree, this is straight। Now what is slanted? Now it is tilted,
इट इज टिल्टेड, क्या है, स्ट्रेट नहीं है ना, ऐसे साइड की पोजीशन ले रखी है दोनों में ही, बोथ दीज डिग्रीज आर नोन एज आर स्लैंटेड, ओके, ये दोनों ही क्या है, स्लैंटेड है। जो स्ट्रेट नहीं होती, 90 डिग्रीज में नहीं होती, उसको हम स्लैंटेड बोलते हैं, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स इन ए स्लाइटली स्लैंटेड पोजीशन एज इट्स एक्सिस इज टिल्टेड। अर्थ, देखो अर्थ जो है 90 डिग्री में नहीं है, इसकी एक्सिस अब स्लैंटेड है ना, ऐसे 90 डिग्री नहीं है ना, स्ट्रेट नहीं है ना, ये क्या है, स्लैंटेड है ना, दैट तो अर्थ कौन सी पोजीशन में रोटेट करता है, स्लैंटेड पोजीशन में रोटेट करता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, डायरेक्शन से करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन पे अर्थ जो है रोटेट करता है। दैट इज व्हाई इट अपीयर्स एज दो द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इसलिए हमें लगता है कि जो सन है वो ईस्ट से राइज कर रहा है और वेस्ट से क्या कर रहा है, वेस्ट पे सेट हो रहा है, ओके। नाउ डे एंड नाइट, now what causes day and night due to rotation? Day and night causes, day and night are caused by the earth's rotation, day और night कैसे होता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट हमारे ऑकर होता है। As the earth rotates, a part of the planet faces the sun. I already told you it. Now look at this picture. This is our earth, okay, now and this is the sun. जब अर्थ की डायरेक्शन, अर्थ की एक फेस की डायरेक्शन जब सन के साइड में होता है तो वो वाला साइड क्या एक्सपीरियंस करता है, डे एक्सपीरियंस करता है, और उसका जो अपोजिट डायरेक्शन है जहाँ पे सन नहीं है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, नाइट एक्सपीरियंस करता है। नाउ दिस इज आवर नेचुरल सैटेलाइट मून आल्सो, ओके। The part of the earth that faces the sun experiences day, while the other part that is away from the sun experiences night. और जो other part है वो क्या experience करता है, night experience करता है। Now I'm going to showing you a little animated video. Just please enjoy your video. You're able to understand it more clearly after seeing this video. In education, rotation, revolution, and its effects. Is the birthday boy tired of answering phone calls today? Are you hungry for some birthday lunch? No, I am not tired. I feel very good that everyone remembers my birthday. Actually, everyone except Dadima and Dadaji. It's not that they can't call up while touring USA. They had called 2 days ago when they had reached. How can they forget my birthday, Mummy? Oh, darling, they will never forget your birthday. I'm sure they'll call you in the evening. Why evening? Why can't they call me now? You are covering up for them. They must have forgotten. Oh no, love. They haven't forgotten your birthday. Fine. I'll call up Dadaji right now and ask him myself. They'll be fast asleep right now, Rohan. We will wait till 8 p.m. and if they don't call you by then, we will call them up. No, they never sleep in the afternoons. Why can't we just call them up right now? Oh, because it is not afternoon in the USA right now, Rohan. It is midnight there. How is that possible? Wait, I'll show you. Get the table globe and a torch from the study table. Now, do you notice where India is and America is? Yes, I do. This is India and this is America. Now, I want you to turn the globe around from left to right slowly but without moving the base of the globe stand. And while you are at it, I'll hold the torch here at a distance for you. Now, let us assume our torch is the sun while this globe is our earth.
This is how the Earth rotates on its axis. Earth's rotation causes day and night. Since the Earth rotates from west to east, the sun seems to rise in the east and set in the west. A single rotation of the Earth takes about 24 hours or one day. Wow! Now the sun is shining brightly in the sky over India, right? Why don't you tell me what is happening in the US? Oh my god! They have no sunshine right now. You are right, Mummy. It is night in the US right now. I would have never imagined it this way. How does this happen? Sure, the axis of the Earth is inclined at an angle of 66.5 degrees to the plane of the Earth's orbit around the Sun. It is always tilted in the same direction, and this tilt has a major effect on the distribution of sunlight that the Earth receives. At sunset, the lighted part of the Earth turns away from the Sun and moves into its own shadow, causing night. The circular line that separates night from day is called the circle of illumination. This circle of illumination does not coincide with the Earth's axis. ओके स्टूडेंट्स, सो आपने देखा कि हमने हमने जो रोटेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे डे एंड नाइट कॉजेस होते हैं। नाउ आपके भी मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते होंगे। नाउ आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू कि क्यों डे और नाइट होता है, क्यों अर्थ का एक पार्ट जैसे इंडिया में अभी डे है तो यूएसए में नाइट क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स सन रेज एंड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सिस। नाउ class, I hope you all understand the meaning of rotation and what causes day and night. Okay, tomorrow we are going to study about revolution and what causes seasons. Okay, thank you so much for joining the class, everyone. Take care of yourself. Bye bye.